Hi, good afternoon, everyone. This is Shefali Singla, and in this session, we will be discussing the concept of binary expression tree from data structures and algorithms. बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री हम वेरियस पर्पसेस के लिए यूज करते हैं. वन इज अगर आप को कन्वर्ट करना है एक तरीके के एक्सप्रेशन को किसी और फॉर्म में, देन वी आर यूजिंग द बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री. So before this, we had discussed few applications of stack in which we learned how to convert the infix expression to the postfix expression. Then we talked about postfix evaluation. So all these things we have covered in the applications of the stack. तो उन्हीं algorithms को हम थोड़ा सा यहाँ पे use करेंगे, but in a modified manner. तो चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री होता क्या है. नाम से समझ में आ रहा है, दिस इज अ बाइनरी ट्री. बाइनरी ट्री मतलब एक ऐसा ट्री जिसमें नोड के दो चिल्ड्रन होते हैं. बट बाइनरी ट्री में हम बोलते हैं कि नोड कैन हैव जीरो चाइल्ड हो सकता है, वन चाइल्ड हो सकता है और टू चिल्ड्रन हो सकते हैं. बट जब हम एक्सप्रेशन ट्री की बात करें, एक्सप्रेशन से हमें ये समझ में आता है कि एक्सप्रेशन के अंदर अंदर हमें ऑपरेटर मिलेगा. वी विल बी गेटिंग हियर द ऑपरेटर and will be getting the operand as well. So अगर आपके पास ऑपरेटर आता है, that means उस ऑपरेटर को एग्जीक्यूट करने के लिए we need two operands. So this means that अगर यहाँ पे आपके पास कोई ऑपरेटर, मान लीजिए प्लस आया है, इस प्लस ऑपरेटर को एग्जीक्यूट करने के लिए इसको आप ऑपरेट किसके ऊपर करवाओगे? दो ऑपरेंड्स के ऊपर. So we need two operands. This is operand 1 and this is operand 2. तो इसका मतलब हर एक ऑपरेटर के लिए आपको दो ऑपरेंड्स चाहिए. दिस मींस दैट वी कैन से दैट कि आपके पास जो नॉन लीफ नोड है, जो इंटरनल नोड है, एवरी इंटरनल नोड विल बी हैविंग एग्जैक्टली टू लीफ नोड्स और टू चिल्ड्रन. अगर किसी भी नोड के एग्जैक्टली टू चिल्ड्रन है तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज द स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री. तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला कि भाई जो आपके पास ऑपरेटर वाली नोड है उसके टू चिल्ड्रन होंगे और जो ऑपरेंड वाली नोड है उसका कोई चाइल्ड नहीं होगा. दैट मीन्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर रिस्ट्रिक्टेड टू 0 और 2. So 0 is for the leaf node and for the internal node that is going to have two children. 0 or 2 children means we will be having a strict binary tree. तो जितने भी आपके पास binary expression tree bante hain, these are always the strict binary tree. So in the strict binary tree, leaf node is representing the operands और जो internal nodes हैं वो operators represent करते हैं. So we can say that in binary expression tree, this is a strict binary tree जिसमें leaf nodes represents the operands, यानी किस डेटा के ऊपर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, एंड नॉन लीफ नोड कंटेन्स द ऑपरेटर विच इज अप्लाइड टू द रिजल्ट ऑफ. ये ऑपरेटर किसके ऊपर अप्लाई करोगे? ऑन द लेफ्ट चाइल्ड एंड द राइट चाइल्ड. ये आपके पास सिंगल ऑपरेंड भी हो सकते हैं और दिस कैन बी द लिंक. ये लिंक हो सकता है आपके पास सब ट्री के लिए. सो दिस कैन बी द रिजल्ट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री और द राइट सब ट्री. once we obtain the expression, जब आपको expression मिल गया for the particular expression, तो आपको easily किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री बनाया इन फिक्स एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि इनफिक्स एक्सप्रेशन से बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री कैसे बनता है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन से बाइनरी ट्री कैसे बनता है, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन से बाइनरी ट्री कैसे बनता है. सो दिस मीन्स दैट if I am constructing the tree from the infix expression, तो मेरे पास यहाँ पे tree बन गया. I'm going to get a binary expression tree here. अब जब इस ट्री को मैं ट्रेवर्स करूंगी इन द प्री ऑर्डर, इस ट्री का अगर मैं प्री ऑर्डर फाइंड करूंगी, आई विल बी गेटिंग द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन. I'll get here the prefix expression. This means that if you want to convert the infix to prefix expression, तो आप क्या कर सकते हो? आप एक binary expression tree बनाओगे, उसको प्री ऑर्डर में ट्रेवर्स करोगे तो आपको प्रीफिक्स मिल जाएगा. अगर इसी ट्री को, जो आपके पास रिजल्टेंट बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री आया है, अगर मैं इसको पोस्ट ऑर्डर में ट्रेवर्स करूंगी, if I'll be traversing this tree in the post order, then I'll be getting the postfix expression. इस वीक की वीडियोस में आई विल बी डिस्कसिंग द ट्रेवर्सल एल्गोरिथम्स. आई विल शेयर द शॉर्टकट ट्रिक एज वेल, ताकि आपको ट्री ट्रेवर्सल्स में कोई दिक्कत ना हो. So once we obtain the expression tree for a particular expression, तो conversion is very
easy for different notation. Similarly, अगर मैं prefix expression से tree बनाती हूँ, तो that means I'll be getting prefix to infix, prefix to postfix. Similarly, postfix expression से अगर आपके पास binary expression tree बन रहा है, उसको आप traverse कर रहे हो in order में, you will be able to get postfix to infix conversion and postfix to prefix conversion. So this is another way of converting one form of expression to another form. And evaluation becomes a matter of traversing the expression tree. सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको? Traverse करना है tree को. So in order traversal of the expression tree, in order traversal क्या देगा? This will give you infix order. Post order traversal will give you the postfix expression. Pre-order traversal will give you the prefix expression. So this is how the conversion is possible. अब चलिए अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्सप्रेशन ट्री किस तरीके से बनेगा. हमें ये तो समझ में आ गया कि एक्सप्रेशन ट्री होता क्या है और एक्सप्रेशन ट्री हम कहाँ पे यूज करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द एक्सप्रेशन ट्री फॉर द गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन. So in the infix expression, we know that for the operator, we will be having two operands. आप यहाँ पे ये approach भी follow कर सकते हो. The highest priority operator will be handled first. तो यहाँ पे highest priority किसकी है? Brackets की. So first of all, I'll be creating the tree for 2 minus 1. So 2 minus 1 means operator is minus. ऑपरेंड इज 2. ऑपरेंड 1 क्या है? 2. लेफ्ट साइड पे क्या आएगा? 2. तो ये जितनी भी मैं नोट्स बना रही हूँ, दिस इज हाउ वी क्रिएट द नोट्स इन द ट्री. तो जो हम नोट्स क्रिएट करते हैं स्पेशली फॉर द बाइनरी ट्री, तो हम जैसे डबली लिंक लिस्ट में वी हैव 2 पॉइंटर्स एंड द डेटा, सो इट विल बी क्रिएटेड लाइक, although मैं यहाँ पे implementation की बात नहीं करूंगी, we will be just learning that how to construct the tree. So data is 2, and on the left side it will be pointing to the left child, and the right side पे it will be pointing to the right child. अगर मैं इस tree की बात करूं, here the data is minus. यहाँ पे आपके पास एक नोड बनेगी. Initially this is pointing to null, this is pointing to null. And here we are going to create two nodes with the data 2 and with the data 3. So this is the structure of a node of a doubly linked list. Now this node will be pointing here. ये arrows memory में नहीं बनते, यहाँ पे हम pointers का concept use करते हैं. So we'll be providing the address of the node with the data 2 in the left pointer. Right pointer में हम address provide करेंगे ऐसी node का जिसमें data आपके पास 3 है. तो ultimately this looks like 2 3 minus. Now we need to take the next priority. So this is 4 minus 1. So here we are getting 4. Operator is minus and operand 2 is 1. So we are getting here 4 minus 1. After that, we are getting here multiplication is having higher priority. So 2 into 3. I'm so sorry. This was 1. 2 minus 1 tha yahan pe. We had 1. 2 minus 1. Now we are getting 2 into 3. So I'll take a tree with operand हमेशा और हमेशा कहाँ पे बनेगा आपके पास? लीफ नोड पे. So this is 2 into 3. तो ये सब एक्सप्रेशन बन गया. Now for the division, this sub expression is operand 1 and operand 2 क्या आ रहा है आपके पास? यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन आ रहा है. So here the operator is 2 multiplied by 3. This is the left subtree. अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि simply आपके पास एक नोड नहीं आ रही. This is pointing to a subtree जहाँ पे expression evaluate हो रहा है आपके पास 2 into 3. On the right side, we are getting here division and this is 2 minus 1. So this is handled for multiplication. यहाँ पे आ रहा है आपके पास multiplication के लिए. On the left side, we are getting the operand 5. तो हम एक नई node create करेंगे 5 and right child is nothing but that's a subtree. तो आपके पास subtree आ गया. So we got one simple expression here. Now we are getting plus of both. So this is the expression tree.
So we can say that this is our binary expression tree. अब इस tree को अगर मैं in order में traverse करती हूँ, I'm going to use the trick. जिन लोगों को पता है, well and good. जिनको नहीं पता, I guess on Wednesday we will be having the session on tree traversal, so I'll share the trick. So here, if I want to find out the pre-order means root will be visited first. तो हम root से start करेंगे. Pre-order traversal कर रही हूँ, so I'm getting the root. Then left subtree element, so I'm getting division, multiplication, then we are getting 2, 3, then minus 2, 1, and then we are getting, here we are getting multiplication, 5, minus 4, and 1. So this is nothing but this is the equivalent prefix expression for, ये आपके पास equivalent prefix expression है for the given infix expression. ये जो आपको expression दिया था, this was the infix expression. So this is how we got the prefix expression corresponding to the given infix expression. अगर मैं इस tree का यहाँ पे post order लिखती हूँ, post order में हम क्या करते हैं, क्या trick है, will start from the leaf nodes, क्योंकि आपके पास root end पे visit होता है, so we'll start visiting the nodes from the leaf nodes. Leaf nodes are too many. यहाँ पे बहुत सारी leaf nodes आ रही है, so we need to select the leftmost leaf node first, क्योंकि जब हम traverse करते हैं tree को, then left subtree elements are traversed before the right subtree elements. So leftmost leaf node is 2, 2 is deleted, then 3 is deleted. After that, जब दोनों child delete हो गए, then multiplication becomes the leaf node. This is the leftmost leaf node. This is over. Now division is having one child, so we need to consider this first. 2, then leftmost leaf node is 1. 2 and 1 दोनों delete हो गए, तो minus will become the leaf node. Minus. This is also deleted. तो इसका मतलब division आपके पास क्या बन गया, leaf node. So we'll be taking the leaf node. After that, we are getting here the leaf node as 5. 5 is deleted. Multiplication नहीं ले सकते because multiplication is having one child available. So 4 and 1 में से 4 is the leftmost leaf node, then 1 and then minus. क्योंकि जब 4 और 1 delete हो गया तो आपके पास minus will be the leaf node. बाकी आप जिस मर्जी तरीके से post order लिख रहे हो, just tell me if you are getting this post order. हो सकता है आप में से कुछ लोग trick नहीं जानते होंगे, which I'll be discussing on Wednesday in detail. So I'm just writing the post order for the given tree. 4, 1, minus, then we'll get multiplication and finally plus. So you can see here this expression is nothing but this is the postfix expression. तो इसका मतलब मेरे पास infix expression था. Infix से मैंने binary expression tree बनाया and then I'm traversing that in the post order, so I got the postfix expression. So this is another way of converting the given infix expression to the postfix expression. I hope that this must be clear to everyone. Next is for your practice. So here we are given with 2 plus 3 multiplication 6 plus 4. So first of all, we'll be creating a binary expression tree for 2 plus 3. So 2 is the operand. So create a new node with the data 2. Then create a new node with the data 3. And then we have the operator plus. So operand 1 for plus is 2, that is the left child, and the right child means operand 2 is 3. After that, we are getting multiplication. For this multiplication, the sub-expression means subtree is operand 1 for multiplication. Here we are getting operand 1 as a subtree, which is representing the sub-expression 2 plus 3. And on the right hand side, we are getting the operand 6. Now, plus 4. So this whole sub expression is the left child for the operator plus. Plus के लिए आपके पास left child आ गया. And then on the right hand side, we have the operand. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितनी भी इस tree में हमारे पास leaf nodes हैं, all the leaf nodes are representing the operands and all the operators are the internal nodes of the tree. So we have got the tree. If I'm going to write its pre-order,
अगर मैं यहाँ पे इसका प्री ऑर्डर लिखती हूँ, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करके व्हाट विल बी गेटिंग द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन. So we'll get here the prefix expression, and if I'm going to find out the post order of this tree, that means I will get the postfix expression for the given infix expression. Apart from this, we have discussed the manual approach as well. So if you want to tally, you can tally your answers. Pre-order means we'll be starting it from the root. So it will be plus multiplication plus and 2. Then we are getting 3, 6 and 4. We have to get the post order. So 2 is the leftmost leaf node, then 3 is the leftmost leaf node, then plus will be available, then 6 will be the leaf node, then multiplication, then you'll get 4 and then plus. So this is how we can convert the infix expression to postfix or prefix. I hope that this is clear to everyone. कोई doubt? ठीक है, चले आगे. Comfortable? So now uh, let's understand how to create a expression tree from the prefix expression. जो prefix expression से tree construct करने का algorithm है, that is exactly similar to that of prefix to postfix conversion. Prefix to postfix conversion में हम क्या कर रहे थे? We have already discussed this algorithm. अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने सेशन मिस किया था तो बेटा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. Just go through it. So prefix to postfix में हम क्या कर रहे थे? We were reading the string from right to left. तो definitely आपके पास order क्या रहा होगा? Operand 2, operand 1 and then operator. This is the prefix expression. तो इसका मतलब stack के अंदर आपके पास पहले operand 2 जाएगा and then will be, अगर आपके पास ऑपरेंड है तो हम पुश करवा रहे थे एलिमेंट्स को, इसका मतलब पहले ऑपरेंड 2 गया स्टैक के अंदर, देन ऑपरेंड 1. And now when we'll be popping out the elements, first of all we'll get operand 1. First pop is giving you operand 1 and then second pop operation will be giving you operand 2. So this was the algorithm. और उसके बाद हमने क्या बोला था? Since we had to convert it to the postfix expression, so we were representing the expression as operand 1, operand 2 and character. Character is nothing but the operator. और जो भी आपके पास resultant expression आ रहा था उसको हम वापस से stack के अंदर push करवा रहे थे. That means for each operator, for one operator we had to perform two pop operations. हमें दो pop operations perform करने थे and we had to perform one push operation. That means total 3 operations perform हो रहे हैं for one operator, 2 pop and 1 push operation for the operator, right? And now since you have understood why we are getting operand 1, first ये कब होगा? जब आप string को right to left read कर रहे हो. So in this is almost the same way, same तरीके से हम लोग binary expression tree construct करेंगे from the prefix expression. And this way we have to complete the steps for the whole string. So you can see here the algorithm for creating the expression tree. मैंने यहाँ पे बेटा कुछ भी नया नहीं लिखा है. We are reading the expression tree from right to left read कर रहे. अगर आपके पास ऑपरेंड है, just create a leaf node और उसका एड्रेस कहाँ पे पुश करोगे? स्टैक के अंदर. क्योंकि अब हम ट्री बना रहे हैं, so we need to create a node. और जब node create होगी, its address will be pushed into the stack. अगर आपके पास ऑपरेटर आ रहा है, we need to pop out two elements and we need to perform one push operation. पॉप आउट जब किया तो वो किसका एड्रेस होगा? दैट विल बी ऑपरेंड 1. ऑपरेंड 1 इज नथिंग बट दैट इज द लेफ्ट चाइल्ड फॉर द नोड, एंड operand 2 means right child, so it is going to have the address of the right child. So what we are saying is we have the operator, we have operand 1 and operand 2. So operand 1 is nothing but that's the left child and operand 2 is the right child. So we are एडजस्टिंग द एड्रेस. कहाँ पे एडजस्ट करने? नोड के अंदर. अभी मैंने आपको एक स्ट्रक्चर लेके बताया, जब हम ट्री बनाते हैं वी आर यूजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ नोड ऑफ डबली लिंक लिस्ट. सो वॉट एवर इज द रिजल्ट, जो भी आपके पास ये सब एक्सप्रेशन के लिए ट्री बनेगा, बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री,
इसको वापस से पुश करवा देंगे ट्री के अंदर. सो पुश द नोड एड्रेस ऑन द स्टैक. कौन सी नोड? जो आपने नई ऑपरेटर नोड क्रिएट की. After that, we'll be moving the pointer towards the left. राइट से लेफ्ट रीड कर रहे हो, सो वी नीड टू मूव द पॉइंटर टूवर्ड्स द लेफ्ट. और कब तक हम ये करेंगे? अंटिल वी रीच टू द एंड. तो जैसे ही आपके पास कोई और इनपुट नहीं बचेगी, वी हैव रीच टू द एंड, तो जो भी एड्रेस आपके पास टॉप ऑफ स्टैक पे अवेलेबल है, जस्ट पॉप इट आउट. So this is how we were getting the prefix to postfix expression, और उसी तरीके से हम tree construct करें. Let us consider the example. We need to create a stack here. We need to read the string from right to left. Right से left read करेंगे. So first of all, I'm getting the operand. What I'll do is I'll take a stack. मैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में बना रही हूँ rather than creating it vertically. But anyhow, we know that both the operations will be performed from the same side because only one end is open for the stack. तो सबसे पहले मैंने एक node create करवाई. Let's say this is the stack S. यहाँ पे मैंने एक नोड क्रिएट करवाई. किसके लिए? ऑपरेंड के लिए, क्योंकि जब आपके पास ऑपरेंड आ रहे हैं, we just need to push it into the stack. So I'll create a node 1 and its address is pushed here. फिर मैंने एक नोड क्रिएट करवाई with the data 4 और इसको कहाँ पे पुश करवा दिया? स्टैक के अंदर. Now we are getting the operator. Operator means we need to perform two pop operations. So what I'll do is I'll pop out the first element for the node minus this will be the left child, that is operand 1. I'll pop out the next element, that will be operand 2. Now I'll push it back. जो भी आपके पास रिजल्ट आया, अब स्टैक के अंदर आपके पास दो एड्रेसेस थे, दोनों पॉप आउट हो गए. नाउ इट विल बी पुश्ड बैक इन द स्टैक. मैंने स्टैक में पुश करवा दिया. रीड द नेक्स्ट कैरेक्टर, दैट इज 5. सो आई विल क्रिएट अ न्यू नोड विद द डेटा 5 एंड इसका एड्रेस हमने स्टैक में पुश करवा दिया. अब हमें क्या करना है? नाउ वी नीड to pop out two elements because you are getting the operator multiplication. तो इस multiplication के लिए मैंने first element को pop out करवाया, that is operand 1. Operand 1 means left child. So I'm getting here 5 as the left child for multiplication and right child क्या आएगा? अब यहाँ पे आपके पास जो node का address है, that is the address for some sub expression tree. So that is having the operator minus with the left child 4 and right child 1. जो ये आपके पास सब एक्सप्रेशन ट्री बना है, इसका एड्रेस, सो बोथ आर डिलीटेड फ्रॉम द स्टैक. ये दोनों हट गए, तो इसका मतलब स्टैक खाली है. सो इन द एम्प्टी स्टैक द एड्रेस ऑफ दिस ट्री will be pushed. Address of this tree will be pushed into the stack. Now I'm reading the next character. I'm getting the operand. Operand is 1, so I'll create a node with data 1 and it will be pushed into the stack. Reading the next data, that is again the operand, so it will be pushed into the stack. एक हमने node create करवाई with data 2, so it is pushed into the stack. Okay. Now read the next character, that is the operator. So for the operator, need to pop out the first element, that is the left child, it is 2, and pop out the next element, that is right child 1. So it becomes 2 minus 1. ये जो resultant tree आया, इसका address कहाँ पे store करवाएंगे? This is deleted. So now this subtree is pushed back into the address of the newly created node with the data as the minus operator. So this will be pushed back into the stack. So it is, I'm so sorry. So it is pushed back here. It is pointing here. अब क्या करेंगे? Read the next character. So I'll create a new node with the data 3. I'll create a new node और इसको stack में push करवा दिया. Create a new node with data 2 and will push it into the stack. Now we are getting the operator. तो operator के लिए नई node create करवाई आपने. Delete the first element, that is the left child.
delete the next element, that is 3, that is the right child. अब क्या करेंगे, will push it back, जो भी आपके पास result आया will push it back in the stack. So here now it is pointing to multiplication. ये यहाँ पे multiplication को point कर रहा है. Now for the division, we are again getting operand 1. So this is operand 1 for division, that is the left child, and right child is, this is deleted, right child is this tree. So it is -2 and 1. ये जो आपके पास एड्रेस आया है सब ट्री का, इसको वापस से हम स्टैक में पुश करवा देंगे. So it is pointing here now. Now finally I'm getting the operator plus. So I'll create a new node for plus. Left child क्या आएगा plus के लिए, delete the top element. So this whole subtree will be deleted, that is division, multiplication, 2 and 3. ये पूरा का पूरा ट्री में as it is बना रही हूँ. So this is 2 and 3, and for division here we are getting -2 and 1. For plus, we need the second operand, so I'll be deleting the next top of stack पे. अब ये सब tree बचा है, so I'll be deleting this. So I'm getting here multiplication 5. On the right side we have -4 and 1. So this is the finally we have got the binary expression tree for the given prefix expression. I hope that the algorithm is clear. Algorithm समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, because we have already discussed how to convert prefix expression to postfix expression using the stack. So same concept हमने यहाँ पे use किया है. The only thing is you need to create the nodes. So you can see here we are getting the leaf nodes as all the operands. जितनी भी leaf nodes है वो सारी के सारे operands है, और जो internal nodes है वो operators है. So this is exactly the same tree that we have got for the first example with infix. अब अगर आप इसको traverse करोगे in order में, you will get the infix expression. If you traverse this into the post order, then you will get the postfix expression. Exactly, you can see here we had got, so this was the tree. So अभी भी हमारे पास यही tree बना है. तो when you'll be traversing it in order, so you will get the sequence. जब post order में traverse करोगे, you will get the sequence. मैं इसको दोबारा नहीं लिख रही हूँ, आप अपना आंसर टैली कर सकते हैं. Now this was the second example. यहाँ पे हमने infix से बनाया था. So you can see the tree. Same tree will be getting here, but now this time we'll be constructing this tree from the prefix expression. Just give it a try. Take 30 seconds and then I'll discuss it. Read करना है आपको right to left. You need to read the string from right to left. So first of all, we are getting the operand. Operand means create a new node and push उस नोड के एड्रेस को आप स्टैक में पुश करवा देंगे. तो सबसे पहले हमारे पास नोड क्या आ रही है, दैट इज विद द डेटा 4. सो आई विल क्रिएट अ न्यू नोड विद द डेटा 4. मैंने यहाँ पे नोड क्रिएट करवाई विद द डेटा 4. इस नोड का एड्रेस कहाँ पे पुश करेंगे, स्टैक में. Then I'm creating a new node with the data 6. So I have created a node with data 6. इसको कहाँ पे पुश करेंगे, स्टैक में. Then again we are getting the operand. So for the operand, create a new node with the data, given data, that is 3. Similarly, यहाँ पे फिर से आपके पास operand आया, so I'll create a new node with the data 2. Now we are getting the operator. Operator is what? That is plus. जो भी ऑपरेटर आया इसके लिए आप एक नई नोड क्रिएट करवाओगे, एंड इस नोड के लिए लेफ्ट चाइल्ड विल बी whatever is available on top of stack. Top of stack पे 2 available है, so it will become the left child, and top of stack पे जो next node है that will be the right child. Now this will be pushed into the stack. जो भी आपके पास रिजल्टेड ट्री आया उसको हम वापस से पुश करेंगे, बिकॉज हमने ये बोला कि अगर हमारे पास ऑपरेटर आ रहा है देन वी नीड टू परफॉर्म 2 पॉप ऑपरेशंस एंड 1 पुश ऑपरेशन.
नाउ आई एम गेटिंग द ऑपरेटर मल्टीप्लीकेशन. मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए नोड क्रिएट करवाई. वॉट एवर इज अवेलेबल ऑन टॉप ऑफ स्टैक दैट विल बिकम द लेफ्ट चाइल्ड. सो दिस नोड is deleted. मैं इसी को modify कर रही हूँ. So this is deleted now. This is deleted, and now we are deleting the next node, that is with the data 6. So it will become the right child, and its address will be pushed back in the stack. जो इस नई node का address था, that means multiplication का, it will be pushed in the stack. Reading the next character, that is plus. So creating a new node with plus, pop out the top element. Top element में आपको ये पूरा सब ट्री मिल रहा है. So I'm taking the sub tree. We have multiplication plus 2, 3, and 6. And for the right child, we need to pop out the next element. So this is popped out. Next element is 4. So this is popped out. इस एड्रेस को आप वापस से स्टैक में पुश करोगे. आफ्टर पुशिंग दिस एड्रेस इन द स्टैक, after pushing this address in the stack, when you'll read the next character, that is the null. So you will pop this address, is root node ka address pop out karoge, and this is the equivalent tree. Now if you are going to traverse this tree in the in order, in order ke liye hamare paas kya hota hai, free fall. तो इसका in order क्या आ जाएगा आपके पास? In order will be 2 plus 3 multiplication 6 plus 4. So this is the infix expression corresponding to the given prefix expression. Similarly, if I'll find out the post order, so I will get the postfix expression. Post order is nothing but that is 2, 3 plus 6 multiplication 4 plus. So this is nothing but this is your postfix expression. That's it. So this is about constructing the binary expression tree from prefix. तो यहाँ पे हमने क्या किया? We have converted the given prefix expression. So with the help of this prefix expression से आपने क्या find किया? You have got the infix expression, and from prefix expression you have got the postfix expression. So in order to convert prefix to postfix or prefix to infix, you can use the concept of binary expression tree. Now let's last type of construction, that is constructing the tree from the postfix expression. So this is exactly similar to the algorithm जो हमने postfix evaluation के लिए discuss किया था. In the postfix evaluation, we were reading the string from left to right. Left to right means आपके पास पहले operand 1 आएगा, then you'll be getting operand 2, and then you'll be getting operator. तो हमने यहाँ पे क्या बोला था कि अगर आपके पास operand आ रहे हैं, simply push it into the stack. तो algorithm में भी हम यही करेंगे. अगर आपके पास operand आ रहे हैं, create a new node with that particular operand और उसका address हम stack में push करवा देंगे. So operand को हम क्या करवा रहे हैं? Pushing it into the stack. If we are getting the operator, हमने क्या बोला? Operand आ रहा है तो push it into the stack. So I have got operand 1, I have got operand 2. अब जब मैं pop out करूंगी, definitely अगर operator आएगा, we need to perform 2 pop operations and 1 push operation. तो जब pop out करेंगे तो सबसे पहले क्या मिल रहा है? Operand 2. Tree के केस में operand 2 is nothing but that is the right pointer. Second pop is giving you operand 1. Operand 1 means left pointer. और जो भी आपके पास सब expression tree आएगा will push it back to the stack. So this is what we have already discussed. तो इसी के basis पे here are the steps for the construction of the expression tree from the postfix expression. First of all, we are reading the postfix expression from left to right. अगर आपके पास operand है, आप एक leaf node create करवाओगे और उस address को push करवा दोगे stack के अंदर. And if it's the operator, we need to pop out 2 elements. First pop is giving you operand 2. Operand 2 means the address of the right child. If it's the second pop, then it will be giving you operand 1. That means the address of the left child. After that, जो भी आपके पास resultant tree आएगा, उस address को आप वापस से stack में push करवाओगे. Then move the pointer towards the right, because we are reading the string from left to right.
तो आप पॉइंटर को किस साइड पे मूव करोगे? राइट साइड पे। कब तक? जब तक आपके पास राइट साइड पे सारे कैरेक्टर्स खत्म नहीं हो जाते। सो आई होप अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो एल्गोरिथम में कोई नया स्टेप आपको नहीं मिला होगा. So I'm taking the same example, but now I'm taking the postfix expression. Now from this postfix expression, we will be constructing the tree. So here we have to read the string and read the characters from left to right. अगर आपके पास ऑपरेंड आ रहे हैं, let's create a stack here. अगर आपके पास ऑपरेंड आ रहे हैं, then we need to create a node और उसका एड्रेस कहाँ पे डलवाएंगे? स्टैक के अंदर. So here I'm getting the operand 2, तो I'll create a node with the data 2 और इसका एड्रेस स्टैक में पुश करवा देंगे. Then we are getting the node with the data 3, क्योंकि ऑपरेंड आया, नोड क्रिएट करवाई आपने और इसका एड्रेस स्टैक में पुश करवा दिया. Now we are getting the operator. So for the operator multiplication, we'll pop out the first element. Now this time, first of all, we are getting operand 2 or the right pointer. Then we are getting operand 1, and then that operand 1 is nothing but the left pointer. जो भी आपके पास एड्रेस आया, will push it back in the stack. So I'm just making a changes here only. So I'll push it back to the stack. Now read the next character. We are getting 2. Create a new node with the data 2 and push it into the stack. Create a node with data 1 and push this into the stack. Now we are getting the operator minus. Minus के लिए क्या करेंगे? For minus, we'll create a new node. एक न्यू नोड क्रिएट करवाई. डिलीट द टॉप. टॉप को आपने डिलीट करवाया, मैंने टॉप को डिलीट करवाया, दैट इज 1. और 1 क्या बन गया? राइट चाइल्ड. फिर मैंने टॉप को डिलीट करवाया, दैट इज 2. ये वाले लिंक को डिलीट किया और ये क्या बन गया आपके पास? राइट चाइल्ड. एंड वॉट एवर इज द एड्रेस, इट इज पुश्ड बैक इनटू द स्टैक. Read the next character, that is division. For division, I'm creating a new node. Whatever is available on top of stack, that will become the right child. So it is minus 2 and 1. 2 and 1. फिर मैंने टॉप को डिलीट करवाया. टॉप इज मल्टीप्लिकेशन किसके बीच में? 2 and 3 के बीच में. So 2 and 3. This becomes the left subtree. जो भी रिजल्ट आया, will push it back in the stack. So let's say this is the stack. So I'm pushing it back to the stack. Division को आपने handle कर लिया. So this is pushed back in the stack. Now I'm going to create a new node with the data 5. Operand है, push it into the stack. Read the next character, that is also the operand 4. So I'll create a new node and its address will be pushed in the stack. Read the next character, that is also the operand. So its address, a new node with the data 1 will be created and its address will be pushed back into the stack. Now we are getting minus. For this minus, I'll first of all create a node with minus. एक नई node create करवाई with minus. अब यहाँ पे हमें दो pop operations perform करवाने. First pop is giving the right pointer of minus. Second pop is returning the left pointer of minus. जो भी address आया, this will be pushed back in the stack. Read the next character, that is multiplication. So same way you have to read all the characters. Multiplication आया, मैंने एक नई node create करवाई. इसका left child कौन सा होगा? First of all, top will be returning the right child. तो top पे this link is available, तो इसको हटाया. This is removed and this becomes the right subtree. I'm so sorry. Here we had minus. Okay. Now top को फिर से delete करवाया. This becomes the left child and this will be pushed back into the stack. Read the next character. Now we are getting plus. For plus, delete the top. Top में क्या रहे? Address of multiplication. Multiplication के left में हमारे पास 5 है and right में we have minus and to the
left of minus we have 4 and to the right of minus 1 is present. So this is the right subtree. Left subtree kya hoga? This is gone. This is deleted. Now this is the right subtree. So again you can see, are we getting the same tree? Undoubtedly yes. So this is how you can construct the binary expression tree from the postfix expression. So algorithm is same as that of the postfix evaluation. So for operand, you just need to create a node and push it into the stack. If it's the operator, need to perform 2 pop operations and 1 push operation. So this is the resultant tree. अब अगर मैं इसका in order find किया तो I'll get the infix expression. So this means that postfix से मैंने binary expression tree बनाया and in order traversal करके I will get the infix expression. So this is how you can convert the postfix expression to the infix expression using the stack. Which data structure are we using? We are using the data structure that is stack. Similarly, postfix इस binary expression tree को अगर मैं pre order में traverse करूंगी, I will get the prefix expression. Prefix expression. So this is about the creation of the binary expression tree from the postfix expression. एक example आपके लिए दोबारा से कर लेते हैं. So just give it a try. This is a very small expression, and after that I'll discuss few important points and then we'll end our discussion. आज वाले मास्टर क्लास में जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, those are very very important. थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज वाली मास्टर क्लास में, सो दैट बेसिक से ऊपर उठकर हम थोड़ा सा स्पीड के साथ साथ कॉम्प्लेक्सिटी पर भी वर्क करें. Alright, so what we have to do here is we need to read the string from left to right. हम left से right पे read करेंगे. यहाँ पे हम data structure stack use कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक stack बना लेती हूँ. We do not know what size of stack is required, तो randomly मैंने कुछ भी बना लिया. So first of all, when I'm reading the character, that is 2. 2 means यहाँ पे आपके पास ऑपरेंड आ रहा है, तो ऑपरेंड के लिए हम एक नोड क्रिएट करेंगे and will push its address in the stack. फिर मैंने next node next character को read किया, that is also the operand, तो मैंने node create करवाई and address will be pushed into the stack. नेक्स्ट कैरेक्टर इज द ऑपरेटर, तो इस ऑपरेटर के लिए एक नई नोड क्रिएट करवाई प्लस एंड पॉप आउट द फर्स्ट एलिमेंट. पॉप आउट द फर्स्ट एलिमेंट मींस ये लिंक हट गया, 3 पॉप आउट होके मिल गया आपको, सो दिस इज द राइट चाइल्ड. पॉप आउट द नेक्स्ट एलिमेंट, ये लिंक हट गया, दिस बिकम्स द लेफ्ट चाइल्ड. अब स्टैक खाली है, इस एड्रेस को हम वापस पुश करवा देंगे स्टैक में. Read the next character, that is 6 operand, तो एक नई नोड क्रिएट करवाई एंड ये एड्रेस को हमने पुश करवा दिया स्टैक में. Now I'm getting the new operator, that is next character is the operator multiplication. यहाँ पे आपके पास operator आया multiplication. So for this multiplication we are going to create a new node multiplication. Right child will be whatever is available on top of stack. Top of stack पे क्या available है? 6. So 6 will be pushed into the stack. And next top of stack is the subtree. This will be the left child. ये address को वापस हम stack में push करवाएंगे. Read the next character operand. So create a new node with the data 4. Address को push करवाया. Now reading the next character, that is plus. New node is created. Delete the top of stack, that is giving you the right pointer. 4 is the right child of plus. And left child में क्या आएगा? Here we had multiplication. Multiplication के left में आ रहा है plus. To the left of multiplication we have plus. To the right of multiplication we have 6. To the left of plus we have 2. To the right of plus we have 3. This is the resultant binary expression tree which is constructed from the given postfix expression. So now again, if you find the in order you will get infix, if you find the pre-order you will get prefix. So this is all about construction of binary expression tree. आज वाले सेशन में हम लोगों ने understand किया what is binary expression tree,
किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है बेटा आप पूछ सकते हो, बिकॉज दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। इसके बाद मैं वीडियो इसको एंड करूंगी। I'll discuss the schedule for the upcoming classes, binary expression tree. Then we constructed the binary expression tree from prefix expression. Prefix से कैसे binary expression tree construct करते हैं, फिर हमने डिस्कस किया infix से कैसे construct करते हैं, then we talked about postfix. और डेफिनेटली इससे आपके पास बाकी की कन्वर्जन्स कवर हो जाती हैं। प्रीफिक्स से जब आप फाइंड करोगे यू कैन गेट द इनफिक्स एक्सप्रेशन और यू कैन गेट द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। इनफिक्स से आपके पास प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स आएगा, सो इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन एंड infix to postfix conversion. And here we have, this is how we can have postfix to infix conversion and postfix to prefix conversion. कट ऑफ कितना होगा, लास्ट वीडियो में छत्तीसगढ़ मैंने डिस्कस किया था कि कौन कौन से ड्रॉप्ड क्वेश्चन है। आपको एक वीडियो दिख रही होगी, हार्डली वो 5 मिनट्स की वीडियो है, उसमें मैंने कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस की है। सो इट डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी, बिकॉज कभी भी जो कट ऑफ होती है वो फिक्स नहीं होती है। सो 5 मिनट्स का वीडियो है, ड्रॉप्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, किस तरीके से मार्किंग होती है ड्रॉप्ड क्वेश्चंस के लिए, कट ऑफ क्या है, ये सब कुछ मैंने एक ही वीडियो में प्रोवाइड किया हुआ है। So I have covered important applications of stack. इसका मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी applications cover हो गए हैं, but definitely we are going to cover the whole syllabus in the foundation batch 2.0, which is for the aspirants of December 2024 or June 2025. तो की फीचर्स ऑफ दिस बैच आर, इसमें आपको सारी की सारी क्लासेस पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव में मिलती ही है। Along with that, you will get the theory notes and the practice questions. And apart from that, you will be automatically enrolled for the mock test series, and we are going to solve fully solved previous year papers will be given to you. Apart from this, there is a special mentorship program for the students, those who wants to take the admission in the top universities. तो इसमें पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा, कहाँ कहाँ पे आपको के लिए कौन कौन से हेल्पफुल रिसोर्सेज हो सकते हैं, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल. So if you are interested in this one, then you can make a call on the number which is displayed on the screen. आपकी स्क्रीन पे exactly मेरी इमेज के नीचे एक नंबर आ रहा है, so you can make a call on that number. So this is all about this session. In the next session, we will be discussing the Q and its implementation. ये YouTube session का topic बता रही हूँ मैं आपको, super coaching paid classes की बात नहीं कर रही हूँ, because we are running two types of classes, free classes and the paid one. फ्री में सिर्फ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर होते हैं, बट पेड क्लासेस में थॉरोली पूरा का पूरा सिलेबस कवर होता है लाइव क्लासेस में। एंड रिवीजन बैच में आप ऑटोमेटिकली एनरोल हो जाओगे. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्री क्लासेस, वन विच आर हेल्ड ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म एंड अदर वन ऑन द टेस्ट बुक ऐप, जिसको हम बोलते हैं मास्टर क्लास. बेटा ये टेस्ट बुक ऐप पे होती है. टेस्ट बुक ऐप का मतलब ये नहीं है कि हर क्लास के लिए आपको पेमेंट करना है. मास्टर क्लासेस आर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. And YouTube sessions में we are covering the important concepts, and in the master class we are covering the questions. तो आज वाली master class में हम कुछ important set of questions करेंगे from the stack. That will be the last set of questions from stack. And the timing for the YouTube class is 1 p.m. and for the master class it is 3 p.m. Whereas for the paid batch, that is super coaching, I'm just discussing the schedule for paper 2. ये सिर्फ और सिर्फ paper 2 के लिए है. In the super coaching, we have 2 classes per day for paper 2. इसके अलावा paper 1 की भी daily classes होती हैं. So morning class का time है 10 a.m. और ये जो क्लासेस होती है इनकी ड्यूरेशन 2 आवर्स की होती है. मॉर्निंग में 2 आवर्स की क्लास होती है, इवनिंग में 2 आवर्स की क्लास होती है. रेस्ट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक. कई बार प्लस माइनस 10-15 मिनट्स हो जाता है टाइम में. यूजली प्लस होता है, माइनस तो कभी हुआ नहीं है.
So 10 to 12, 10 a.m. to 12 noon, and in the evening we have the classes from 4 p.m. to 6 p.m. जो YouTube क्लास का टाइम है, जो मास्टर क्लासेस का टाइम है, these are like 30 to 45 minutes. So we are having these classes from Monday to Friday, Saturday and Sundays off. That is for your revision and your practice. अब जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहा है तो यूजली क्या होता है कि सैटरडे को एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन होता है जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा फॉर जून 25 और रिजल्ट फॉर द एग्जाम विच हेल्ड इन अगस्त 24, जैसे रिजल्ट आएगा वी विल लॉन्च द बूस्टर बैच विच इज द रिवीजन बैच, in which we'll be covering the important concepts, the most important concepts, और main focus रहेगा questions के ऊपर, previous year questions and practice questions. And then the YouTube sessions, next week I will be discussing the previous year paper questions. हम discuss करेंगे जो जून 24 में हुए थे, जो जून 24 वाले पेपर में पूछे गए थे या फिर अगस्त 24 वाले पेपर में पूछे गए थे, मतलब recent papers में जो question पूछे गए थे. तो नेक्स्ट वीक से हम 1 वीक के लिए ये क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे. सो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा हॉल्ट देंगे, एंड होप these sessions will be useful. अगर इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नंबर जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है उसके ऊपर कॉल कर सकते हो. यू कैन शेयर योर क्वेरी इन द टेलीग्राम ग्रुप, लिंक आपको स्क्रीन पे टॉप राइट कॉर्नर पे दिख रहा होगा. And currently some offer is going on. Promo code आप apply कर सकते हो to get the subscription at the best possible price. So this is Shefali S. एंड जो YouTube क्लासेस होती है यहाँ पे 2 चैनल्स का लिंक दिया गया है. मैं जो बात कर रही हूँ अभी भी जैसे आपने देखा ये इंग्लिश में था, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में यूज कर रही हूँ. तो फॉर दिस वी हैव द यूट्यूब चैनल दैट इज सुपर कोचिंग यूजीसी नेट JRF बाय टेस्टबुक. तो बेटा जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, दोज हु आर न्यू एंड दे आर प्लानिंग टू राइट द यूजीसी नेट, चाहे आप दिसंबर में दे रहे हो या जून में दे रहे हो, एनी हाउ ये सारे सेशंस आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं. तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि उनके पास भी इंफॉर्मेशन आ जाए. एंड अगर आपको ये सेशंस यूजफुल लगते हैं, कुछ सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, एंड यू वांट कि ऐसे और सेशंस आपको मिले, देन फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. I cannot see any doubt or comment in the chat section. So we'll end our discussion here. I'll see you guys at 3 p.m. in the masterclass. Till then, take care. Bye-bye.